आप एक रियल लाइफ के आयरन मैन से कम नहीं है। कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये हिंदू है। तो फिर ऐसा लगा कि भाई हर साल पैटर्न डिनर में लोग तालियां बजाते हैं और एक अवार्ड मिलता है, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलता। लेकिन आई हैड दिस डिजायर कि कुछ करना है इंडिया के लिए। आपके व्यूज क्या है राहुल गांधी के लिए? बिकॉज राहुल गांधी इज सो मच एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ ही अंडरस्टैंड द एआई, जॉब्स एंड फ्यूचर। राजीव गांधी ने हमारी लाइफ को मीनिंग दिया। हम तो खाली इंजीनियर थे, उन्होंने हमें एक पर्पस दिया। लाइफ पोलियो देश से निकाला गया बिकॉज इन राजीव गांधी टाइम वी सेट अप वैक्सीन प्रोडक्शन। आई डिसाइडेड इन 92 टू डिजाइन अ वॉलेट। सर यूपीआई के आप चेयरमैन थे, तो तब कौन से ईयर में इसमें काम स्टार्ट हुआ था और आप लोगों का विजन क्या था, किस तरीके से आप लोग स्टार्ट करें? But one sad part is that social media has been used to promote lies. Social media has been used to promote hate, misinformation, malign people. Will AI replace human intelligence according to you? One sad part is that we have not really used digital platforms more for national development, but we have used for political propaganda. AI क्या jobs खत्म कर देगी? AI is just a tool for us. We invented it, we will control it, we will manage it, and we will make sure that it doesn't kill us. नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो हम सब 5G यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, पर दोस्तों क्या आपको मालूम है ये 5G की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें टेलीकॉम रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है और साथ में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के वो सलाहकार भी रह चुके हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन आवर शो मिस्टर सैम पिट्रोदा सर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्चित जैन पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम है सर सैम पिट्रोदा सर। तो सर वेलकम टू द शो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। या सर, अगर मैं आपको कोई एक उपमा देना चाहूंगा तो आप एक रियल लाइफ के आयरन मैन से कम नहीं हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि द हाउ यू कैन बिल्ड अप दिस कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड इन टर्म्स ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक येलो रेवोल्यूशन इज आल्सो क्रेडिट गोज टू यू, यू आर अ फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन एज वेल। तो सर एक आपकी तरफ से आपका इंट्रोडक्शन देखिए कैसे प्लीज। सबसे पहले फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके यंग ऑडियंस तक हम पहुंच सके। हमारा जन्म हुआ था ब्रिटिश राज के टाइम में इन 1942 एक छोटे से गांव में, उड़ीसा में। गांव नेम इज टिटिलागढ़। हमारे पिताजी वहां गुजरात से काम करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि गुजरात में उस वक्त ड्राउट था और उड़ीसा जंगलों से भरा ग्रीन देश रहा उस वक्त, अभी भी है। सो हम लोग 8 भाई बहन थे, 3 भाई 5 बहनें। गांव में इतनी स्कूल तो थी नहीं अच्छी, गांव में न थी इलेक्ट्रिसिटी, ना था पानी, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन माता पिता ने बहुत प्रेम से 8 बच्चों को पाला और जब आजादी मिली 1947 में, तब हमारे पिताजी को लगा कि वो भी आजाद हो गए, तो अब वो अपने बच्चों को बहुत सारा पढ़ाएंगे। हमारे घर में 5 बड़े बड़े फोटोग्राफ्स थे जो दीवार के ऊपर लगे थे। गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस। वो समय
कोई अलग ही था। देश के लिए प्रेम, बहुत सारी आशाएं भविष्य के लिए, और सब हिल मिल के रहते थे। हमारे घर के सामने एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके भी 8 बच्चे थे, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। दूसरी तरफ एक मारवाड़ी फैमिली था, राइट में पंजाबी सरदार जी थे, और पीछे उड़ीसा के ट्राइबल लोग रहते थे। सब लोग हिल मिल के प्रेम से रहते थे। किसी को ऐसा नहीं लगा कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये हिंदू है। यस। सो जब हम देखते हैं ये क्या हो रहा है अभी देश में, हमें बड़ा दुख होता है। सो हमारे माता पिता ने हमें जब हम 9 साल के थे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, गुजरात। यस। वो बोर्डिंग स्कूल गांधीयन थी, सरदार पटेल के गांव के पास, जहां हम गांधीयन विचारों से बहुत जुड़े। हमारी बोर्डिंग स्कूल में डिसिप्लिन, एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर, मॉरल, ट्रूथ, ट्रस्ट, लव, डाइवर्सिटी, क्योंकि सब तरह के लोग आते थे वहां पे, इंक्लूजन, यू हैव टू लव एवरीबॉडी, वर्क विथ एवरीवन। सो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमें सिखाई गई उस वक्त, वो हमारा जीवन बन गई। हमें पता भी नहीं था कि ये सब चीजें आगे जाके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो अच्छी तरह से पढ़ाई की, फिर हम बड़ौदा आए, वहां से स्कूलिंग खत्म की, और हमें इंटरेस्ट था फिजिक्स में। सो हम फिजिक्स में बीएससी किया, फिर वहां से एमएससी किया फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर एक दफा न्यूज़पेपर में पढ़ा कि प्रेसिडेंट कैनेडी has decided to take man onto the moon। तो 19 साल के जवान, थोड़े मूर्ख, सोचे हम भी जाएंगे अमेरिका। पैसे तो थे नहीं, लेकिन हम स्टूडेंट को पढ़ाते थे उस वक्त, सो हमारे पास अच्छी इनकम थी। हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, 10 12 20 लोगों को। सो हमको पैसे मिलते थे, हम बचपन से खुद का खर्चा निकाल लेते थे। सो अपने पिताजी को बोला कि हम जाएंगे, और बड़े भाई को बताया। बड़े भाई बड़े खुश हुए, बोले जाइए अमेरिका। तो हमने उड़ीसा गवर्नमेंट से लोन ली 3,000 रुपये की, और बोट में अमेरिका आए। मुंबई से कराची, कराची से एडन, एडन से इजिप्ट, इजिप्ट से इटली, नेपल्स, जिनोवा, फिर जिनोवा से ट्रेन लंदन, लंदन से प्लेन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से बस शिकागो। दिस वाज 60 years ago। 60 साल पहले की बात है, 1964। वो जमाना अलग था। यहां भी न किसी को जानते थे, न किसी को पहचानते थे, और सीधे गांव से आए थे। न छुरी कांटा से खाना आता था, न कभी ड्रिंक पिया था, न कभी मीट खाया था। तो इट वॉज एन एडवेंचर, कि सब नया था, देश नया था, लोग नए थे, भाषा थोड़ी नई थी, और टेक्नोलॉजी बड़ी इंप्रेसिव थी। रिवॉल्विंग डोर हमने कभी देखा ही नहीं था। डोर नॉब जो होता है, ये हमने कभी नहीं देखा था। टीवी हमने देखा था डिजाइन करने में, लेकिन प्रोग्राम नहीं देखा था, क्योंकि इंडिया में उस वक्त टीवी नहीं था। ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हमारे जन्म के बाद हुई 1947 में। हमें ट्रांजिस्टर में बहुत इंटरेस्ट था।
सो यहाँ आके हम फिजिक्स के लिए आए थे पढ़ने को, लेकिन प्रोफेसर ने बताया कि भाई 5 साल लग जाएंगे पीएचडी करने में। तो हमारी गर्लफ्रेंड थी इंडिया में कैंपस। हमने बोला हमें 5 साल हम वेट नहीं कर सकते, हमें तो 1 साल में पढ़ाई खत्म होनी चाहिए, तो नौकरी करें और हमारी गर्लफ्रेंड को बुलाएं। तो बोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाइए। ठीक है, हम बोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो 1 साल में हमें मास्टर्स डिग्री मिली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इन दोज डेज विथ एम्फेसिस ऑन डिजिटल सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, डिजिटल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, सब नया था हमारे लिए। तो मास्टर की डिग्री के बाद हमें जॉब मिला। उस वक्त डिफेंस में जॉब बहुत थे बिकॉज ऑफ वियतनाम वॉर। तो हमने बोला डिफेंस में काम नहीं करेंगे, गांधी जी के चेले हैं, जितना भी पैसा दो डिफेंस में काम नहीं करेंगे। तो डिफेंस में $1000 मिलते थे महीने के। हमने जॉब लिया $525 में नॉन डिफेंस में। फिर शादी की, हमारी गर्लफ्रेंड आई यहाँ पे, शादी की। और एक वक्त ऐसा सोचा था कि 3-4 साल में पैसा कमा के देश वापस चले जाएंगे और वहां फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएंगे। 60 साल हो गए यहाँ पे। उसके बाद 1 बाय 1 फैमिली मेंबर्स को बुलाया यहाँ पे, सब भाई बहन सब लोग यहाँ आए, सब यहाँ पढ़े, सबने शादी की। तो हमारे कुटुंब में यहाँ पे अभी 100 लोग हैं, मेरे भाई बहन, उनके स्पाउस, उनके बच्चे, उनकी शादी, उनके बच्चे। हमारे माता पिता यहाँ रहे, उनका देहांत यहीं ही हुआ। और अब हमारा हिंदुस्तान में कोई नहीं है फैमिली में, हमारा पूरा फैमिली अमेरिका में है। इसके बाद जैसे जैसे लोग आते गए फैमिली में, हम सेटल हो गए यहाँ पे। हमारे 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, इन देयर लेट 40s। हमारा सन है कैलिफोर्निया में, मैरिड टू एन इंडियन डॉक्टर, born and raised in America. So Salil and Arpita live in San Francisco. उनके 2 बच्चे हैं, आर्या, ईशान। हमारी डॉटर LA में मूवी बनाती है, हॉलीवुड में। She went to Michigan, then went to London Business School, got an MBA, married a young man from South Africa, Gujarati. She has a daughter. So we are all here. This is our world. लेकिन इन बिटवीन हम हिंदुस्तान वापस आए 10 साल के लिए, राजीव गांधी के समय में। क्योंकि हम एक दफा दिल्ली गए थे, दिल्ली से हमने ट्राई किया हमारी वाइफ को फोन करने के लिए शिकागो में 1979 में, वो फोन नहीं लगा। तो हमें बड़ा अचरज हुआ। हमने यहाँ पे बहुत काम किया था फोन पे। तो बोले अब नेक्स्ट 10 years इंडिया के फोन को फिक्स करने में लगाएंगे। उस वक्त हमारे वहां 2 मिलियन फोन थे, अब हमारे पास 1.5 बिलियन फोन्स हैं। उस वक्त किसी को कोई पता नहीं था सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम $200 बिलियन वर्थ ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं और सर्विसेज हर साल। सो वो दुनिया बहुत अलग थी 1980 की। लोगों को पता नहीं है कैसे हुआ, किसने किया। लोग वही समझते हैं कि ये तो हो ही गया वैसे ही, किसी ने तो बलिदान दिया। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में बलिदान दिया लोगों ने, स्पेस रिसर्च में बलिदान दिया, एटॉमिक एनर्जी में बलिदान दिया, मिल्क रेवोल्यूशन में बलिदान दिया। ऐसे टेलीकॉम भी एक बड़ा सब्जेक्ट था,
जिसमें आपके जैसे यंग लोगों ने बहुत काम किया इन 80s। वो तो सब रिटायर हो गए अब, लेकिन उन्होंने 80s में C++ लैंग्वेज पे काम किया, यूनिक्स पे काम किया, माइक्रो प्रोसेसर्स, मेमोरीज, हार्डवेयर, क्वालिटी कंट्रोल, यू नो फेल्यूर एनालिसिस, ये सब चीजें के बीज लगाए। कभी कभी जो बीज लगाता है वो फल नहीं खा सकता, फल खाने वाले कोई अलग ही होते हैं। सो हमने बहुत सारे बीज लगाए, टेलीकॉम, आईटी, इन टेक्नोलॉजी मिशंस, इम्यूनाइजेशन, कुकिंग ऑयल, मिल्क रेवोल्यूशन, लिटरेसी। सो आज जो फल लोग खा रहे हैं उन्हें कोई पता नहीं कि ये बीज किसने लगाए, क्यों लगाए, कब लगाए, कैसे लगाए, और क्या लोगों ने बलिदान दिया। और बिना समझे, बिना सोचे लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ऐसा समझते हैं कि सब मोदी साहब ने ही किया। झूठ बोलना एक आदत हो गई लोगों की, और लोग पढ़ते भी नहीं है उतना। सो ये छोटी सी हिस्ट्री आपको बताई, यस बहुत सारी चीजें सर। बीच में हुई। अगर मैं करेक्ट हूँ तो आपने 100 पेटेंट्स आपके नाम पे हैं, उसमें डिजिटल वॉलेट भी शायद आप ही के द्वारा इस देश में आविष्कार किया गया था, करेक्ट? तो सर उन 100 पेटेंट्स के बारे में आप कुछ बताओगे कि क्या क्या है? जब हम पहली दफा टेलीकॉम में काम में लगे बाय एक्सीडेंट, हमें तो पता भी नहीं था कि हमें टेलीकॉम में जॉब मिलेगा। हम्म तो बाय एक्सीडेंट हमें टेलीकॉम में जॉब मिल गया, और बाय एक्सीडेंट वो ग्रुप डिजिटल टेलीकॉम पे काम कर रहा था। सो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग मौका 1965-66 में मिला। और बीइंग ए फिजिसिस्ट, I thought a little differently than electrical engineer. Electrical engineer thought more in terms of circuit. As a physicist, I thought more in terms of larger systems. And I got a first patent on tone generation, digital tone generator. I got excited कि ये बड़ा interesting है. So very soon I had 30 patents in digital communication, on conferencing and tone receiver, tone generation, switching system and all that. तो फिर ऐसा लगा कि भाई हर साल पैटर्न डिनर में लोग तालियां बजाते हैं और एक अवार्ड मिलता है, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलता। तो बोले इस नौकरी बंद कर देंगे और खुद का धंधा करेंगे। तो एक दो अमेरिकन थे, उनसे बात की और खुद की कंपनी शुरू की, वेस्कॉम स्विचिंग, 1974 में। यस और उस जमाने में तो इंडियन मैनेजर्स थे नहीं, अब तो लोग सीईओ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब जगह हैं। उस जमाने में कोई इंडियन मैनेजर बहुत कम थे। तो ये कंपनी में हमारी तरक्की हुई, साथ 2000 लोग कंपनी में काम करते हुए लग गए। और फिर वो कंपनी हमने बेच दी रॉकवेल इंटरनेशनल को। रॉकवेल इंटरनेशनल को उसके जमाने में $50 मिलियन, वो 50 जमाने मिलियन 79 में। लेकिन I 79 was a small partner. So I became head of Rockwell. I had 3 offices, शिकागो में, सीडर रैपिड्स में और डालस में. I had a corporate jet and I was living lavish corporate life. I was 38 years old. लेकिन I had this desire कि कुछ करना है इंडिया के लिए।
क्योंकि I was poor and I knew that I have left a lot of my poor friends, poor family members behind. So there are some kind of guilt in first generation. Second generation doesn't care. Okay. So when I got this opportunity कि टेलीकॉम पे काम करने का मौका मिल रहा है, तो मिसेज इंदिरा गांधी से मिले। राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आ रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने हमें सपोर्ट दिया, बोले ठीक है जो करना हो वो करो, क्या चाहिए आपको। तो हमने बताया कि हम बिल्ड करेंगे, हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास बिना पैसे हैं, हमें मौका दीजिए। तो उन्होंने हमें मौका दिया, पॉलिटिकल विल दिया। जब मिसेस गांधी की डेथ हुई तो हमें थोड़ा डाउट हुआ कि ये काम आगे नहीं चलेगा, लेकिन जैसे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बहुत साथ दिया। फिर धीरे धीरे उनसे दोस्ती हो गई, क्योंकि हमारी उम्र के ही थे, वो 1-2 साल छोटे थे। लेकिन ही वॉज ए ग्रेट लीडर, gave total trust, confidence, support, and we worked together well. Without him, हमें ये मौका नहीं मिलता। तो हम तो कहते हैं कि राजीव गांधी ने हमारी लाइफ को मीनिंग दिया। हम तो खाली इंजीनियर थे, उन्होंने हमें एक पर्पस दिया लाइफ में कि इतना बड़ा काम आप कर सकते हो। सो 10 साल उनके साथ काम किया, सी डॉट बनाया, सी डैक बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया इंडिया में, लेकिन सब गवर्नमेंट के साथ से। देखो राजीव गांधी के जमाने में बहुत सारा काम हुआ, लोगों को पता नहीं कि पोलियो देश से निकाला गया, बिकॉज इन राजीव गांधी's टाइम वी सेट अप वैक्सीन प्रोडक्शन। We are the largest producer of milk today because we had a mission and leader like Kurian. We worked on literacy, but telecom and IT was one of the major contributions. He also did a lot of things on Panchayat Raj, education policies, but I'm really talking about what I had to work on. उसके बाद राजीव गांधी की डेथ हो गई, हम भी बहुत नाराज हो गए। हमने हमारी नेशनैलिटी बदल दी थी फ्रॉम अमेरिकन टू इंडियन, क्योंकि यू कुड नॉट वर्क फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड स्टिल बी फॉरेन नेशनल, इट वाज नॉट राइट। और हमें हार्ट अटैक हुआ, सो आई हैड अ क्वाड्रुपल बाईपास। सो हमारी फैमिली बहुत नाराज हो गई, बोले चले वापिस ले जाएं अमेरिका। हम 10 साल वहां रहे फैमिली के साथ। हमारे पिताजी माताजी यहाँ थे, स्पेशली माताजी बोली कि भाई वापिस आ जाओ। तो हम अमेरिका वापिस आ गए, लेकिन उस वक्त हमारे पास वीजा नहीं था, क्योंकि आई हैड गिवन अप सिटीजनशिप। सो टूरिस्ट वीजा लेके आए, लेकिन पैसे थे नहीं, सब पैसे खत्म कर दिए थे। तो फिर हमारे पास पैटर्न थी इलेक्ट्रॉनिक डायरी की, यू नो, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डायरी जो उस जमाने में बिकती थी। Yes, Casio ओके, की. Yeah, हाँ, दिस इज फ्रॉम तोशिबा, Toshiba, Casio. कासियो। ओके, ये कासियो की है। हाँ, ओके, ये कासियो की है। yes sir. सो आई हैड अ पैटेंट ऑन दिस, Patent on this. I owned the patent on diary. I was the first person to own a patent on handheld device.
Yes. including phones and all that. This was in 75. But patents last only for 20 years. Okay. So then I sued all of these in court. Toshiba, Casio, Sharp, TI, Radio Shack, and HP. And I got some money from court case. I won the case to restart my life. Okay. Okay. Then at that time, I decided in 92 to design a wallet. Wallet. Okay. ये देखो ये पहला मॉडल है प्लास्टिक मॉडल वॉलेट का Oh, 91 92 का है ये yeah. okay so Yeah. file a patent in 96 on wallet, got a patent, and then I had series of patents on wallet, maybe 50 or so. Set up a company on wallet in America. But these little things did not satisfy me. So I became chairman of a bank in London called WorldTel. World tap. WorldTel, TEL. Okay, world tap. वो यूनाइटेड नेशंस की एक बैंक बनाई जिसमें GE Capital, AIG and Intel were the investors. The idea was to privatize telecom in other countries. I had privatized telecom in India. Before I came, telecom was only government controlled. So I was the first one who privatized telecom with the help of Rajiv. No one ever thought that telecom could be privatized. So we got people to produce product. We later on issues licenses for mobile. I was the one who delayed mobile entry till we could wait for GSM standards. So we don't do analog. So all kinds of complications. Okay, people don't understand. We had to fight labor unions to go to digital technology and reduce jobs. We computerized railway reservations, which was a big fight with the railway union. Okay, union said, "Bhai, aap computerize karoge to hamare to job chale jayenge." So it was a different world. Okay. So I then worked out of London. I would commute from Chicago to London and back and forth, and kept my involvement with the global telecom. उसके बाद जब मनमोहन सिंह became prime minister in 2004, I had campaigned for the Congress party because I believe in the idea of Nehru and Gandhi. I believe in democracy. I believe in human rights. I believe in free media. So I came back and became head of Knowledge Commission. So I prepared a big report with the help of my colleagues on India's knowledge industry, opportunities, institutions, and infrastructure. It's a very big report with almost 300 different points, 27 different subjects. Then I decided, with the help of Dr. Manmohan Singh, to work on innovation and digital India. So to connect Panchayat with broadband, I pushed that through. I found the funding for it from USO Fund, Universal Service Obligation Fund. I worked with the military, army, and others to free up their band so we could auction for 3G and all that. Then I worked on many things. Worked on Prasar Bharati Bill, work on railway modernization. I did a report on railway modernization. I did a report on power grid. So, but a lot of this stuff was done underground. The whole
UPI, the payment system. Yes. Okay, I was chairman of the committee with Nandan, and we did a lot of interesting things, but we were not busy telling people what we did. We were doing work. Today, it is all about PR and promotion and not about work. We always said our job is to work. Our work will speak someday. Exactly. कि हमें we don't have to toot our horn कि ये किया वो किया वो किया, because that was Gandhian. अभी क्या हो गया है कि before you do anything you just inaugurate and publicize and have all kinds of TV programs and social media and do nothing. It was exactly opposite in our time. You did your work quietly. Okay, nobody needs to know what you did, but as long as people benefit, that's the basic idea. तो I never सर went around telling people कि हमने कभी salary नहीं दी इंडिया में. I worked in India for so many years, never took any salary. Okay. But you did that because it needed to be done. ठीक है, हाँ बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे. या सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर. सर यूपीआई के आप चेयरमैन थे, तो तब कौन सी ईयर में इसमें काम स्टार्ट हुआ था और आप लोगों का विजन क्या था, किस तरीके से आप लोग स्टार्ट कर रहे थे? See, Nandan was working on universal ID, Aadhaar, which was very important. And if you have a ID, how we can use it effectively while keeping people's freedom, safety and security in mind to help in other areas. One was definitely all delivery of government services, e-governance. I was chairman of the e-governance committee, okay, in Manmohan Singh's time. So all the e-governance that you talk about today had roots in Rajiv Gandhi's time. NIC was set up then. In our time, in early days, Dr. Seshagiri was the champion of e-governance. Then various people came. In Manmohan Singh's time, we had Dr. Garola, and we all worked together as team. Nobody knows Garola, but Garola was a very smart man with a PhD in electrical engineering from Delhi IIT. And Garola never went off looking for publicity. But they were all hardworking, dedicated people. So we worked with Garola and his team, YK Sharma and others, in improving public services. So e-governance was a larger platform. Payment was one piece. Aadhaar was another piece. Then you had various applications for passport, income tax, okay, other services to be delivered, pension programs, railway reservations. So many things which started as a tool to improve governance ultimately became tool to deliver better public services. So it started with government program to improve database, communication between district and state and federal government. And slowly, it went out to the people. Okay. And thousands of programmers worked at NIC. Okay. National Informatic Commission National Informatic Center, Center. NIC. So, this is all things. सर, आपके एक्सपीरियंस या आपकी कोई स्टोरी शेयर करोगे जिसके साथ आपने राजीव गांधी सर के साथ जो डिस्कशन करा हो, और वो बात बहुत अभी सारा तक है, या बहुत सारा है वो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर, उनमें से जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो.
जो आपको बहुत मेमोरेबल हो आज भी? Okay, बहुत सारे हैं, लेकिन let me just tell you that हम्म, he would call sometimes at 10 o'clock at night, हम्म, and my wife and I will go and spend some time with him. हम्म, And he would have all kinds of ideas. He was full of ideas, enthusiasm. I'll take my wife once in a while because, I could hardly see her. We were all busy. Okay. Um, and Rajiv was a man in a hurry. He had a vision to take India into 21st century. He wanted to use technology to improve lives of the common man. He was committed that in 21st century, India should enter with respect and dignity. He understood that IT and telecom will change the face of India. Okay. So there were so many incidences. For example, when Gorbachev was visiting India, मैंने बताया उन्हें कि भाई गोरबाचौव से हमें मिलना है, तो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो सब तैयारी शुरू की हमने. जयराम रमेश हमारे साथ थे. हम्म, वो हमारे सॉर्ट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जैसे थे. सो प्रेजेंटेशन तैयार किया. अशोक गांगुली जो चेयरमैन हिंदुस्तान लीवर के थे, और डॉक्टर अरुणाचलम हेड ऑफ DRDO, वी ऑल पुट टुगेदर ए थिंग. हम्म, फिर पता चला कि हम गवर्नमेंट से नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी और हमारी ब्यूरोक्रेसी बोलती है कि भाई ये तो नहीं हो सकता, हम्म, क्योंकि गोर्बाचोव प्रेसिडेंट है सोवियत यूनियन का, ये लोग तो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, प्रोटोकॉल डजन अलाउ. तो राजीव का फोन आया कि भाई सैम ये तो नहीं हो सकेगा, क्या करें. मैंने बोला एक करिए कि शाम को आपके वहां वो खाने आते हैं गोर्बाचोव, हम्म, सो टेल हिम दैट यू विल हैव टी विद सम फ्रेंड्स हम्म, एंड बाईपास ब्यूरोक्रेसी. सो बोले ठीक आइडिया है. सो गोर्बाचोव के साथ उनका डिनर खत्म हुआ 10 बजे रात को. हम्म, उन्होंने बोला कि चलो वी आर गोइंग टू हैव कॉफी विद सम फ्रेंड्स. सो उनके घर में कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोग पहुंच गए. जयराम ने प्रोजेक्टर सेटअप कर दिया था. हम्म, तो हमने गोर्बाचोव को प्रेजेंटेशन दिया कि इंडिया क्या कर सकता है सोवियत यूनियन के साथ. एंड इन दोज डेज राहुल एंड प्रियंका वेरी वेरी यंग, they were also there, and we all had coffee together. We spent an hour with Gorbachev. हम्म, So he could do these kinds of unconventional things. Okay. He could support new ideas. He could take risk. Okay. So there are so many examples. Similarly, he would just call me and say, look, I remember once he said, President of Vietnam is visiting. I want you to spend 1 hour with him. So I go spend 1 hour with the President of Vietnam. Okay. And we had dinners with Aga Khan. We had dinners with, all the prime ministers in those days. I mean, this is 40, 45 years ago. Okay. Um, we were busy. We were so busy doing things that we had no idea, you know. And in the process, we really didn't take care of our health, and ultimately I had a heart attack because we slept 3, 4 hours. It was like being on drug all the time, you know. It was so energizing, and you didn't have answer to everything. You were learning in the process. You were making mistakes as well, but you were clear that you need to do this for the nation. You were not doing it for yourself. You had no desire to get the glory. You had no desire to siphon off money. Okay, you were Gandhian, and you are Gandhian, no matter what all these other crazy people say. You know, so that was a different life. yes. तो सर, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अभी अभी का जो करंट सिनेरियो है, पिछले जो 10 साल के, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय जो था, इनमें आईटी के सेक्टर में आपने क्या चेंज देखा है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के में और पिछले 10 साल?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छी बात है कि हमने आईटी को आगे रखा है. करेक्ट. So I must give credit to this government that they have continued our effort on IT and not kill it. So आधार को आगे बढ़ाया, पेमेंट को आगे बढ़ाया, ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाया. It's nice. Supported IT service industry, NASCOM, and social media really took off in the last 10 years. In Manmohan Singh's time, there was social media, but hadn't really matured. Manmohan Singh time, we planted all the seeds. And now we are benefiting from the seeds that we planted. Okay. So not just the payment, but overall development of e-governance has also helped. But one sad part is that social media has been used to promote lies. Social media has been used to promote hate, misinformation, malign people. You know, I mean, right now there is something going on social media about me that I have not even seen, but somebody told me by some girl, who has said I'm involved in deep state. It's all bogus. They're all liars. They're just crazy people. But this is what goes on in our system. Kya karo? Okay. You don't have time to defend all this because that's waste of time. Okay. So one sad part is that we have not really used digital platforms more for national development, but we have used for political propaganda. I wish that we had used these platforms to improve literacy, education, math, science teaching, more, better health services. Okay. अब देखिए जो मनमोहन सिंह के टाइम में प्रोग्राम लॉन्च किया था टू कनेक्ट ऑल ओवर पंचायत, स्टिल नॉट डन. आफ्टर 10 years इट्स नॉट डन. ओके. सो वैसे प्रोग्राम जिससे पब्लिक को फायदा होता है उस पर कम ध्यान दिया गया है, और जिससे पॉलिटिक्स को फायदा होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली. बट मैं एक चीज पॉइंट कहना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन सर. व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, इट्स अराउंड ईयर ऑफ 2013. ठीक है. तो आई लिसनड अबाउट यू फ्रॉम माय फादर. ही इज आल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन मतलब स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग. तो ही टॉक अबाउट यू विद माय मदर हु इज अ हाउसवाइफ. तो सर ड्यूरिंग दैट टाइम एक एंथुसिज्म मेरे मन में आया था कि काश मैं अगर आईटी में कुछ कर पाऊं तो आपकी तरह कुछ कर पाऊं, और वो चीज आगे हो पाए ना हो पाए. बट आज मुझे आपसे कन्वर्सेशन करने में जो सर जो मतलब अंदर से आनंद आ रहा है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता. आई एम बिकम वाइट. बट सर रियली रियली ये मेरे लिए एक आप लाइफ में आप बहुत जैसे बड़ा. इतने आप जैसे इतने यंग टैलेंटेड लोग हैं देश में. आप लोगों ने तो आईटी बनाई है. आप लोगों ने जो पढ़ाई की वो बहुत कठिन थी. ओके. बहुत लोग नहीं समझते ये आईटी में पढ़ना सीधा साधा नहीं है. Be an expert to work to dedicate your life is not very simple. You have to let go a lot of pleasure. Okay. And now you are deep in it. So you are sacrificing already. Okay. But people don't realize that. Okay. I understand that if you had important work, you would rather work than go see a movie or play cricket. Okay. So you are already making a contribution. Okay. And a lot of you young people have long way to go because IT revolution
The next phase is going to start with AI. So everything we have done so far in e-governance is basically obsolete. Yeah. So we need to create new AI-based e-governance platform. Okay. So AI से कौन से जॉब चले जाएंगे, कौन से नए जॉब क्रिएट होंगे, AI का फायदा एजुकेशन में क्या है? If you have AI, do you really need 4-year degree? What's the use in having 4-year degree if you have AI? Because you know exactly what question to ask, and AI will tell you the answer. Exactly. Okay, so what is the sense in mugging up all this stupid stuff? Okay. Yeah. But then AI will be required to do other things. Can we build better human beings with AI? Can we build, better farming with AI? Can we educate people faster? Can we improve health services? So that is the challenge for your generation. You got to take this to the next level. One thing is you can take it to next level only for the industry people. So rich will become richer. Another thing is to take this to common people. So they will also get better. And that's the challenge you all have. You know. सर एक क्वेश्चन ये आता है कि एआई जो है आपका क्या पर्सनलाइज थॉट है एआई के लिए भारत के कंट्रीब्यूशन में या भारत के विकास में? देखिए सब देश के विकास में एआई का बहुत बड़ा योगदान होगा। एआई से क्या है कि अभी तक तो सर्च इंजन जो थे वो आपको सर्च करके बताते थे। आप करिए सैम पिट्रोडा तो बताएगा कि सैम पिट्रोडा की 5,000 आर्टिकल्स हैं, तो 5,000 आर्टिकल कौन पढ़ेगा? करेक्ट। AI will read it for you and summarize it for you. Okay. So it is important in IE era to ask the right questions to get the answer you need. So now the search is no longer about search, but it's about knowledge. Okay. You can ask AI, write an interesting article. For example, the first thing I ever tried on AI, first time when I used GPT, I said, can you write a review of Sam Pitroda's book on Redesign the World? And I got a very nice 1-page review. Exactly. It will take me, 1 day to write. Yeah. Okay. Even if after I read the book, and it took 1 minute to write. Okay. So AI can ask you, help you in everything. Everything. So my personal goal would be to make everyone self-learner. तो 15 साल के आप हो, by then you are a self-learner. You don't need to go to college, you don't need to go to school, you don't need to go to boarding school. You know how to learn. And you learn whatever you want to learn. You learn how to make wine, you learn how to fly, you learn how to design aeroplane, you learn how to explore ocean, you learn how to improve farming. So the key to next generation is to really create more entrepreneurs, empower more people, and take freedom, democracy to the next level. So that's why I worry about people who want to curb freedom. क्योंकि जो फ्रीडम है वो डेमोक्रेसी और इंफॉर्मेशन एज के साथ जुड़ी हुई है। सी इंफॉर्मेशन से क्या हुआ कि इट empowers you. It makes Archit Jain as knowledgeable as Sam Pitroda.
देयर इज नो डिफरेंस। पहले क्या था, लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए, ओके। अब you can just ask question, get all the information. I don't need to know the names of all my bones. I can find out. तो डॉक्टर सभी क्या करते हैं, रट्टा करते हैं सब, everything is about ratta. That is gone. So you need to build curiosity. You need to find ways to search things. You need to explore new frontiers. You got to think out of the box. Okay. अब ये सब चीजें नहीं है because it is not part of the culture. कल्चर बोलता है कि आप स्ट्रिक्ट हो, यही मानो, भगवान में मानो, ये करो, वो करो, ये मत करो. No, you have to break all the norms. Okay. You got to explore new frontiers. Don't tell me what I should do. I will decide what I want to do. And that's where freedom comes. Sir, will AI replace human intelligence according to you? No. No. AI will be able to help us as a tool to think better, but AI cannot replace me because I have emotions, I have Yeah. taste, I smell. Okay. I listen different frequencies, different, I'm part of many cultures. Okay. And I have empathy, I have sympathy. Okay. So all of these things are going to be difficult. And even if, let's say, AI can replace me, it'll be my avatar. Okay. And I'll have two Sam Pitroda, in a sense. I sometimes, tell friends that, look, I wish I had 5 of myself. I can give one to my wife so she doesn't bother me anymore. I can give one to my children and all. Okay. I can give one to my friends. I can give one to my work, and I can work by myself. You know. तो सर इसी के बीच में थोड़ा फन एलिमेंट मैं पूछूंगा आपसे। पूछिए प्लीज। यू आर सो मच बिजी इन योर वर्क, सो मच बिजी, क्योंकि जो आपने काम करा है वो आज हमें दिख रहा है। आज हम उसी के कारण आज यू आर सिटिंग इन यूएस एंड आई एम सिटिंग इन बैंगलोर, तो भी ये पॉडकास्ट पॉसिबल हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये आपका एक कंट्रीब्यूशन था, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो सर आपकी फैमिली को आप टाइम दे पाते थे, और आपकी वाइफ आपसे इतना खुश रहती थी कि यार टाइम नहीं मिलता है मुझे, आपके बच्चे खुश रहते थे हमें टाइम नहीं मिलता पापा से? No, you do sacrifice certain things Yeah. in life. You find out later on. So I wish I had spent more time with my kids. But that's the way it turned out to be. I wish I could spend more time with my wife. But that's okay. That's a compromise you make in life, you know. So right now, I make best out of what I have. I'm still reasonably healthy at 82. I had 2 quadruple bypasses. I had cancer. I have a pacemaker. But I'm okay. So you make best out of it. Okay. Life takes you through different journey. It doesn't turn out to be the way you plan. There are accidents in life. They take you to different paths. You meet different people, you meet different incidences. You have to be content. So I am very content. I have a great family. I have a wonderful wife, wonderful children, great friends. No complaints. I'm fulfilled. Okay. I have no big desire. I don't need to be anybody. I'm okay. I don't need any praise from anybody. You can criticize me. I'm okay. सर वन मोर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस कि एआई क्या जॉब्स खत्म कर देगी? जब जब नई टेक्नोलॉजी आती है, हम्म तब तब ये फियर खड़ा होता है
कंप्यूटर आया तब भी लोग कह रहे थे कि ऑटोमेशन से जॉब चले जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। रेलवे रिजर्वेशंस का चल रहा था तब लेबर स्ट्राइक हुई, ये बोले हमारे जॉब चले जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। सो एआई में भी ऐसा फेज है कि वी विल फाइंड न्यू थिंग्स टू डू। यू हैव टू हैव faith in human Yeah. engineering. Yeah. Okay. We will find new frontiers to explore. AI is just a tool for us. We invented it. We will control it. We will manage it. And we will make sure that it doesn't kill us. Okay. So I have faith. AI is not going to replace all the jobs. It's going to change jobs. It will replace existing jobs, but it will create new jobs. Yeah. And it will give us more free time. You know. Yeah. See, the future, if you ask me 100 years from now, Yeah. I would say today we spend 40 hours a week to earn, to live. 100 years from now, you will work 10 hours a week to earn, to live. Food would be in big supply. Quality of life will improve. Hopefully, environment will improve. Infrastructure will improve. And you will be able to really explore your way of living. You will travel all over the world. You'll have a lot of stuff to read, explore new frontiers. So when we say one life is not enough, AI will let you live multiple lives. Yeah. Yeah.